बट दैट्स व्हाट आई सॉ. एक्सपीरियंस ने और सिचुएशन ने मेरे को सब ये सिखाया कि भाई हम यहाँ पे आए हैं जॉब्स के लिए, गुड जॉब्स, गुड सैलरीज, एंड देन ये यहाँ पे ऑपरेशंस में कुछ मेरे को तिगड़म लग रहा है, एंड देन वो मेरे को क्लिक हुआ, एंड देन आई थॉट कि कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमने कभी बाई साइड के एनालिस्ट से बात की. तो अभी हम मिलने वाले हैं अभिजीत हाके से. ये 2016 के पास आउट है. इनका बेसिक बैकग्राउंड है, इन्होंने एमबीए किया हुआ है, CFA लेवल 1 भी किया हुआ है, लेकिन वो 7 साल से एक बाई साइड कंपनी में रिसर्च में काम कर रहे हैं. आई होप आई एम नॉट गोना मेक यू लेट फॉर ऑफिस टुडे. No, that's fine. No, yeah, I think we are on time. No problem. अच्छा. So first of all, welcome for this podcast session that we've been doing for all the students. Majorly क्योंकि उनको समझ में आया है कि how does the real industry actually work, right? Because पढ़ना, ब्लॉग में पढ़ना और एक प्री स्क्रिप्टेड वीडियो पढ़ना, वीडियो देखने में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं. Right. So we will try to keep this as open as possible. And if you don't like some question, you can obviously tell me that you don't want to answer that. Okay. So my first question is because I went through your profile. मैंने आपका प्रोफाइल देखा, तो आप 2016 में आपने MBA कंप्लीट किया है. उससे पहले आपने इंजीनियरिंग किया था. उसके बाद आप 1 साल शायद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट के रोल में थे, लेकिन उसके बाद आप बाई साइड में 7 साल से हैं. More than 7 years, I guess. Right. So how did this happen? If you can just take us through, because generally हम बाई साइड के लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है, दिखते भी नहीं है. ज्यादातर आईबी साइड में या ब्रोकिंग साइड में ज्यादा मुलाकात होती है. तो अगर आप बता पाए कि आप बाई साइड में कैसे घुसे और क्यों आप हो अभी. Right. I'll start with, I've been there. What happened is, post MBA kiya. I had a engineering background. I was a mechanical engineer. My parents had a business, so unka also probably also mechanical engineering business at that time. जैसे ही engineering pass out किया, वैसे ही my parents said that we are going to shut down our business. That is not working. You find something on your own, and so I went into the job market. So that time, जैसे engineering में there's a lot of supply. Engineering students, there's a lot of supply. There's less of a demand. आपको पता है पुणे में almost 70-80 engineering colleges है. So at that time, I saw that, man, this job market is tough, and I had to do something. So I thought about MBA. तो MBA इसी वजह से किया कि कोई प्यार नहीं था फाइनेंस से या किसी से. बस ये था कि अगर MBA करते हैं अच्छे कॉलेज से तो वहाँ पे प्लेसमेंट मिलेंगी, अच्छी जॉब्स मिलेंगे. ये आपको कैसे क्लैरिटी हो गया सर? क्योंकि आजकल तो देखते हैं कि हम लोग MBA, मतलब मैं बोलूंगा काफी हद तक इम्प्रूव हो गया है पर्सपेक्टिव कि MBA करना है तो बेटर कॉलेज से करना है, लेकिन आज भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आर जस्ट डूइंग MBA. उनको ऐसा लगता है कि MBA एक रिक्वायरमेंट है मार्केट में. तो आपको कैसे समझ में आया कि ये MBA करना है तो अच्छे ही कॉलेज से करना है? सर क्योंकि इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से नहीं की थी, तो हमने देखा था उसके रिप्रेजेंटेशन का मार्केट में गए तो देखा था, ब्रैकेट देखा जाता है, and it all shows that good colleges have good teachers, they have good students, you have good colleagues around, there's a good environment, and you excel. And ऐसे ही it's not a good college and vice versa. So yeah, so it shows up in the job market. It shows up, and campus placement और off campus placement में जमीन आसमान का फर्क. Campus placement में they come up to find you. You get a good job and there's everything well defined. You get good salaries if you're from a good college. Right. If you're not from a good college, आपकी बैच साइज होगी 80 या 100 की, और 7 लोगों को या 8 लोगों को जॉब मिलने वाली है. And 92 or 90%. आपका ऑडियो थोड़ा बीच में जा रहा है. If you want, you don't have to use that. अगर आप मतलब if your laptop also has a mic, it's fine. शायद उसमें वो माइक थोड़ा इधर उधर जा रहा होगा, इसकी वजह से आवाज जा रही है. और काफी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से
ये सही है। ये शायद आपका क्लास वाला भी है। क्लास वाला भी है, ये एग्जैक्टली। इज दिस वीडियो इसमें, हाँ, दिस इज फैंटास्टिक। यस। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर आप अच्छे कॉलेज से कोई भी इंजीनियरिंग करो, एमबीए करो, कोई भी डिग्री करो, अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है। अच्छे कॉलेज में इट ऑल शोज अप, यू हैव गुड टीचर्स, यू हैव गुड कलीग्स अराउंड, देयर इज अ गुड एनवायरनमेंट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट गुड थिंग्स, कि आपको वन नॉच ऊपर जाना है, गुड कंपनीज में जाना है। एंड इफ इट्स नॉट अ गुड कॉलेज, इट्स ऑल वाइस वर्सा, एंड आपको जॉब नहीं मिलती ऑन कैंपस, कंपनीज आती है, दे पिक यू अप एंड इट्स ऑल स्ट्रक्चर्ड. Probably if in good colleges you have good salaries also, but in not so good colleges आपको job नहीं मिलेंगी, you go into the market, you can't negotiate. Also it shows up in your knowledge and skills. And then you have to take whatever jobs you get. In my situation, mechanical engineering mein, some of my friends were asked that you have to submit your original degrees, and we'll pay you 6,000 a month, and you have to sign a contract for 2 years. 6,000 a month? Yeah, 6,000 a month with submitting your original degrees and a 2-year contract. So this just shows the supply demand situation in the job market. Has it changed? Slightly. I'm talking about mechanical engineering ka. IT mein of course things are different, but mechanical ka bol raha hu main. So that was the situation, and I udhar pata chala ki good colleges और not so good colleges में what's the difference. So फिर ये सब होने के बाद, ये सब experience करने के बाद, of course I was also told during my younger days सब जो हम बता रहे हैं, but I saw it through experience. And then अगर फिर MBA करना था तो क्यों करना था कि good college and good placements, वहाँ पे placements आएंगी। तो हमने फिर बहुत सारा research किया, दोस्तों को फोन किया जो सीनियर्स थे एमबीए कॉलेजेस में, भाई जॉब्स मिलती है सच में, की सैलरीज होती है सच में, व्हाटएवर वी लुक एट द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। तो तभी ये था कि दोस्त, मतलब जो हमने जॉब मार्केट में हमने जो फटके खाए थे जाके, जो इंटरव्यूज में जाके जो मेरी इंसल्ट हुई थी, उसके बाद में हमने ये सोचा था कि भाई अभी एमबीए करना है तो बहुत अच्छे कॉलेज से करना है, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो नहीं करना। सो दैट्स हाउ आई एमबीए, दैट्स हाउ आई केम टू अ कंक्लूजन दैट एमबीए करना है। फिर 6-7 महीने मैंने जो पढ़ाई करी कि जिंदगी से सबसे अच्छी वाली पढ़ाई करी, 6-7 months, and then luckily I got my MBA college, which is Kumbha in Pune. Right. So उसके बाद अभी सेकंड सिचुएशन आता है एमबीए में आने के बाद। ठीक है, एमबीए में आ गए, इट्स अ गुड कॉलेज, गुड टीचर्स, सब अच्छा है। फिर अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद आपको स्ट्रीम कौन सी लेनी है? करेक्ट। सो दैट्स अ बिगर थिंग, यू डोंट हैव मच नॉलेज। तो अभी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग लोगों को लगता है कि भाई अगर मैं एमबीए करूंगा तो मेरे 4 साल बर्बाद हो गए। मतलब ऑल ऑफ माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग और व्हाटएवर इंजीनियरिंग आई डिड, इट्स ऑल गोइंग टू वेस्ट। क्योंकि एमबीए करूंगा, मैं मार्केटिंग सीखूंगा या फाइनेंस सीखूंगा, एंड देन ऑल ऑफ माय इंजीनियरिंग गोस टू वेस्ट। दैट्स व्हाट आई थॉट एट दैट इनिशियली। सो मैं सोच रहा था कि मैं ऑपरेशंस लूंगा। अच्छा, क्यों लूंगा? क्योंकि ऑपरेशंस इज लिंक्ड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके। So that's what I thought at that time initially. Then sub चालू हुआ, and then I went into my placement cell of my college. अच्छा। तो placement cell में गए, junior member थे हम, first year के थे। तो and पुम्बा में कैसा है कि all of the placement is student driven. So अच्छा, whole of the placement cell is run by students. Okay. There's a minimal professor or teacher involvement. Okay. तो उसमें I was a junior and I was a junior member. I was just learning. I was just looking. I was going to colleges, pitching, and then उधर मेरे को पता चला कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जो सिचुएशन है, वही सिचुएशन इधर ऑपरेशंस को है। The end industry is the same, and the situation is same. And then good jobs किसको है? फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है। इन दो स्ट्रीम्स को सबसे अच्छे जॉब्स है, सबसे अच्छे प्रोफाइल्स है। ऑपरेशंस को इतने अच्छे ये नहीं है। एंड देन बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग करके जाते हैं तो आप वहां पर इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग एक्टिविटी करते हैं, और ऑपरेशन जाते हैं तो
प्लांट मैनेजमेंट ऑपरेशन में चले जाते एग्जैक्टली and what happens is usually they will promote an engineer which has 5 years of experience rather than hiring a fresher MBA operations. So again I'm biased जो मेरा experience है probably could be biased, but that's what I saw. Experience ने और situation ने मेरे को सब ये सिखाया कि भाई हम यहाँ पे आए हैं jobs के लिए, good jobs, good salaries, and then ये यहाँ पे operations में कुछ मेरे को तिकड़म लग रहा है, and then वो मेरे को click हुआ, and then I thought कि अभी क्या करना है, ठीक है, finance तब तक मेरे को नहीं पता था finance करना है, then ठीक है, अभी options क्या है, HR नहीं करना है, marketing I was not like a outgoing person, and मेरी personality वैसे नहीं थी, I liked maths, I liked sitting and analyzing things, so finance kind of fit into that, and my friends they all were into finance, so उनसे बातें करते करते stock markets, economy, ये सब बातें करते करते जो interest develop हुआ, तो उससे finance में बहुत सारा interest develop हुआ, and then impromptu आप बोल रहे हो first year में interest develop हुआ? Yes, क्योंकि first year आपका you don't have to choose a stream, first year is common. नहीं, but that means there was a point at which you felt that okay, I mean you had some discussions, you read something, you discussed something, and then there was some inclination towards finance that you discovered. Yes. So there was an intention obviously to choose finance, then it was not just basis just the jobs. नहीं दो options थे, finance, marketing. Finance was because I developed my interest towards stock markets, towards finance, towards economy. जैसे first year में हमने subjects करे, operations, marketing, finance, HR, सब subject करे, तो उसमें से मेरे को लगा यार finance अपने को अच्छा लग रहा है. It looks interesting. It's all linked to the real world, and उसके बाद then I started learning about finance. वो बहुत ही steep learning curve था, हर एक चीज नहीं थी. Exactly. हर एक वर्ड हम रोज सुनते थे, एंड माय ग्रुप में एक सीनियर मेंबर था जो फाइनेंस से आया हुआ था, सो वी यूज्ड टू आस्क हिम कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, अंडरराइटिंग क्या होती है, हर रोज एमबीए कॉलेज में जाते थे, कट्टे पे बैठते थे और एक नया वर्ड सुनते थे फाइनेंस का. हेज फंड्स क्या होता है, अंडरराइटिंग क्या होता है, एंड at least वो एनवायरनमेंट था, क्योंकि now that comes back to the point that why a good college, because at least that discussion will be there in that katta. Right. नहीं तो वो इंटरेस्ट ही नहीं रहेगी, नहीं तो वो एम्बिशन ही नहीं रहेगी, तो आप कुछ और ही डिस्कस करोगे जो रिलेटेड ही नहीं है. right. So that's how अभी finance, I went into finance. अभी उसके बाद then some of our seniors they had done CFA level 1. अभी सीनियर्स में तो उनका फिर इज्जत बहुत बढ़ गया, यार ये CFA level 1 क्लियर कर लिया, तो दैट यार ये कर रहे बहुत अच्छा है, सो हम भी करते हैं. तो हमारा ग्रुप था 3-4 लोगों का, हमने कुछ सोचा नहीं, हमने डायरेक्टली एनरोल कर लिया. और हाँ, अभी एग्जाम को उसके बाद देखा सिलेबस क्या है, एग्जाम को 3 महीना बाकी है, 4 महीना बाकी है, यार अभी ये तो क्या ले लिया हमने, मतलब फिर देन वी हाँ, बट हमारा कॉलेज दैट वे वाज जैसे एमबीए में ज्यादा कुछ पढ़ाई इतनी होती नहीं है, एंड देन you can still do lot of the stuff. So हम सुबह 8 बजे कॉलेज जाते थे, पहला लेक्चर करते थे, फिर लाइब्रेरी जाते थे 9-9:30 बजे, शाम के 6 बजे तक लाइब्रेरी बैठते थे. So full time during my MBA days I did CFA 3-4 महीने level 1. So CFA must have opened a lot of your perspectives towards finance. हाँ, CFA level 1 से मतलब after my MBA मैं जब इंटरव्यू में जा रहा था, so there was a clear difference between the students who had studied for CFA and the students who did not study for CFA. There was a lot of difference. Right. And after MBA also, what I would say is, मैंने जो भी finance सीखा था at that point, 95% is from CFA level 1. Right. Honestly, MBA में जाके कोई finance नहीं सीखता. मुश्किल है इतने कम टाइम पे. हाँ, इतना एक्सपर्टीज, इतना डेप्थ लाना बहुत मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग you get jobs, you might get jobs, but the end is the depth of finance will not come so fast. Not come, exactly. एक सब्जेक्ट, एक सेमेस्टर, या चलो मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट, 2 कोर्सेज ऑन फाइनेंस, और एक चलो आपने कुछ एक्टिविटी भी कर ली, प्रोजेक्ट भी कर ली, फिर भी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू cover so many things in finance, because you have to start from blank.
financial statements. Correct. And then reach up towards valuation. So that I agree absolutely. But then after that, how did, because I don't see that, was it a struggle for you to get into like research or IB? अभी CFA करने के बाद सो पता था कि अपने को ऐसे रोल्स में जाना है जहाँ पे वी कैन यूज आवर एनालिसिस थिंग्स, वी डोंट वांट टू. सो अभी MBA में सबसे योर बिगेस्ट रिक्रूटर्स आर IT कंपनीज एंड सेकंड बिगेस्ट रिक्रूटर्स आर बैंक्स. करेक्ट. IT में होता है रोल बिजनेस एनालिस्ट, बैंक्स में रोल होता है दे से इंस्टीट्यूशनल सेल्स, फिर बाद में आपको रिटेल सेल्स भी लगा देते हैं, बट देन इज एसेंशियली सेल्स. और फिर देयर आर वेरी फ्यू रिसर्च कंपनीज दैट कम, यू नो, मे बी 1 or 2 or 3. Right. So CRISIL might have come campus. हाँ, CRISIL came. वो हाँ, CRISIL actually CRISIL में ही जाना था, but for some reason CRISIL हुआ नहीं. एंड देन मेरे टाइम पे ये मैं जिस कंपनी में हुआ था, वेरिटी नॉलेज सॉल्यूशंस, इट्स अ UBS का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इंडिया KPO. Right. So they only worked for, basically it was UBS's India arm, but then they sold it off to one of their directors. So they what they do is they said they have an office in Hyderabad and they work for UBS के investment bankers across the globe. अच्छा. So the bankers will send them work in the morning. You have to do the work. You have to it's a compare any work that they send, and you have to give that back. And you're working with that banker over a few weeks, few months, few quarters on a deal. And if that deal happens, you're happy. So you're basically more towards IB side. Yeah. So उस टाइम पे frankly ये नहीं था कि IB में जाना है, इधर जाना है. बस कोई भी प्रोफाइल हो वहां पे CFA level 1 का यूज हो, and it should be analysis profile where I'm looking at financial statements when I'm analyzing things. That was the focus. So क्योंकि where we come from is we can't, हम fresher है, we can't have choices कि हमें यही चाहिए वही चाहिए. So I had a focus कि कोई भी role हो where I'm just analyzing financial statements, looking at financial statements, and I'm using my knowledge that I've learned on CFA level 1. So that was the focus. And ये company हमारे campus पे आई, and CFA level 1 helped a lot during the interviews, and वो job crack हुआ. तो then I went to Hyderabad. So again उधर it was a steep learning curve. Every day. इससे पहले आपने कभी financial model बनाया था college में? हाँ, छोटा मोटा बनाया था, but then again high level. हाँ, high level. Scratch से नहीं बनाया था, but high level छोटा मोटा models हमने बनाए थे summer internships में. But we didn't have much practical knowledge. Okay. तो we just had theoretical knowledge जो हमने CFA level में सीखा था. तो हम जब so I went into my first role, which was IB. So it was a steep learning curve where you're learning everything, you know. रिवॉल्वर क्या होता है, रोज नई चीज. What was your first role? I mean, just right after MBA, सबसे पहला आपने जो काम किया, मतलब I'm not talking about the designation, but usually people have this question, no, first, if I go into research, what am I expected to do? I mean, will I start making models? Will I start researching? Will I do secondary research? Will I just pull out data? So what exactly were you doing in the first few months? अभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अभी फर्स्ट 7 days तो आपका ट्रेनिंग होता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिक सारा ट्रेनिंग हुआ. ट्रेनिंग के बाद पहला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दे हैव देयर बिग स्प्रेडशीट्स वेयर दे हैव देयर कवरेज का कंपनीज, एंड दे हैव टू फिल इन ऑल ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा. सो वेयर दे हैव द कंपनी कंपेरेबल्स, राइट, रिलेटिव वैल्यूएशन शीट जैसा. एंड आई वाज लुकिंग एट रीट्स, and so you had to not just look at statements and put data, just copy paste. You have to adjust for non-recurring and non-operating items. Right. So वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, जहाँ पे ट्रेनिंग मिली थी कि भाई कोई भी नॉन रिकरिंग आइटम हो, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो, उसके लिए एडजस्ट करना है EBITDA, एंड देन पुट दैट नंबर इनटू द एक्सेल शीट जो बना बनाया सेटअप था. And you have to, in the notes, you have to put all of the notes कि आपने कैसे adjust करा है. Okay. And so that was the thing that initially it was an instructional based कि ये है recurring item और ये 3-4 चीज आप करो. हाँ, मतलब
इससे कभी आपको बोर नहीं हुआ? ये बोर होना चालू हो गया? See, my expectations were very low. I was happy that I'm looking at financial statements. क्योंकि मेरे दोस्त कोई बैंक में जाके सेल्स का जॉब कर रहे थे. वो भी बात बराबर है. तो मैं मैं समझता भी हूँ क्योंकि आप 2016 की बात कर रहे हो, तो अभी जितने अपॉर्चुनिटीज में नहीं थे. नहीं थे. स्पेशली पुणे साइड में तो बिल्कुल ही नहीं थे. पुणे में क्रिसिल was one thing that we know we didn't. सबको क्रिसिल ही जाना था. क्रिसिल के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं था. बराबर है. और फिर हमें पता था कि हमारे ऑप्शंस कम है. तो we were happy that we are looking at financial statements, we are learning something. तो वो पहला था कि आपको कंपनी कंपेरेबल्स उसमें आपको नंबर्स डालने हैं. उधर भी you had to put your brains to work to look at maybe completing 7-8 कंपनीज, जिस कंपनी का आपको नाम भी नहीं पता, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढूंढ के उसमें नॉन रिकरिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्लीन करके वो एबिटा डालना है, उसमें नोट्स में डालना है. एंड सो दिस वाज द इनिशियल वर्क दैट वी डिड. एंड देन वहां पे द चैलेंजिंग वाज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग केपीओस. एवरी डे यू विल हैव अ न्यू वर्क. अच्छा. वो आपको बैंकर जो भी काम भेजेगा वो आपके लिए फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट 1 ईयर में तो हर काम नया ही है. एंड देन आपको 10 बजे नहीं पता आपको क्या काम आने वाला है. एंड देन यू जस्ट आर स्ट्रगलिंग टू डू दैट एवरी डे. इधर उधर देखने को भी टाइम नहीं है. IB is actually demanding, it's time constrained. मतलब how does this work? I mean for people who don't know, like when you're working for a client in, let's say, US or Europe, how does this work? I mean, your client stays constant with you. I mean, एक ही है मेरा client. अभी in some cases the clients change. In some cases every day there's a new client. How difficult it is to, like, because we are in another part of the world. Yes. We have our own concepts that we understand. They are in a different market, developed market. Their statements are much more, right. Very clean data is what you tend to get. So was that a problem for you? So we had mentors to work with. And then second thing is जैसे आपने बोला कि आज कौन सा क्लाइंट होगा पता नहीं. आज यूएस का काम आ जाएगा, कल यूके का काम आ जाएगा, परसों हांगकांग का काम आ जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया का काम आ जाएगा. काम कहीं से भी आ सकता है. एंड व्हाट दे डू इज टाइम डिफरेंस के कारण दे विल सेंड यू एन ईमेल. उस ईमेल एक बड़ा ईमेल होगा वेयर दे आर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. अगर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स है सेम काम किया हुआ तो वो भी भेज देंगे. सो दे विल फ्रॉम देयर साइड जितना एक्सप्लेन कर पाए उतना एक्सप्लेन करेंगे. अभी आप 10 बजे ऑफिस में बैठे हो, वो घर चला गया, अभी उसका मेल है आपके पास. अभी आपको 7-8 बजे तक जो भी काम करना है वो उसके हिसाब से करना है. यू कैन आस्क योर मेंटर्स कि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है पहले. एंड देन दैट इज व्हाट यू हैव एंड यू हैव टू वर्क टिल 7-8. एंड फिर उसको 7-8 बजे तक आपको काम भेजने हैं. Once you send him the work, the thing is KPO में you have client is the god, so you have to call him, you have to message him and then get him on the call कि आपने काम देखा भाई, काम आपको अच्छा लगा. If he says yes, then you're done for the day, you go home. If he says no, I want these changes, that changes, फिर 10 बजे, 12 बजे, रात के 2 बजे, सुबह के 4 बजे आप रहे. You have to stay there and you have to send him the work. So that works. This is probably a stint with IB work. Yes. So in IB, I think that's how the front-end bankers also work. If there is a deal, they'll work till 3-4, they'll go home, they'll come back at 9 or 10 in the morning. So that's how bankers have to do. And यहाँ पे भी But I suppose they want to do it, right? Because they have interest in it. Yeah, correct. They have interest in it. For 4 o'clock by force. Right. No, what happens is you work on a deal. You work for probably a month or 2 on a deal with your directors. I'm talking about front-end investment bankers. Right. आप 4 बजे तक 2 बजे तक काम कर रहे हो. 2-3 महीने में अगर डील कंप्लीट हो जाती है, so you, a team of 3 or a 4, you're going to generate 2% of the deal for the bank, and you're going to get a big bonus out of it. So that's a motivation. That's a big motivation. Yeah. High on the price. Right. And then उस टाइम पे ऐसे भी होता था. We were very new, we were freshers. हम अगर कोई डील पे काम करते थे, we were like at the back end. अगर वो डील पास हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी, हमको मेल आता था, बहुत खुश हो जाते थे हम. हमने जिस चीज पे काम कर रहा है वो कंप्लीट हो गया. And then that was good thing. But the KPO's negative thing is the bankers will never call you and say thank you. Meaning, of course, they're paying you.
But हमें लगता था भाई I am also part of the deal. That's what you think. And then you think that कोई मुझे बोले भाई thank you, आपका काम अच्छा था. You want appreciation. Appreciation. That's something you lack. I thought. But I think that kind of experience is not even possible, no, in India. If you really want to work in front side, front office side, opportunity is also limited. I mean, KPO is the best place probably where you can at least have that exposure. Yes. Towards deal. Yes. So this was you're talking about the 1 year that you were working. Yeah. And then why did you shift to buy side now suddenly into fund management side, asset management side? So I was in Hyderabad. I was Pune based. I wanted to get back to Pune. Achha. And this company where I'm working now. You didn't like Hyderabad? No, I like Hyderabad. But I wanted to get back home again. Okay. Staying with family and all. That was my preference. And then some of my seniors were working in this role. I found out on LinkedIn when I was searching. And then I found out that this looks like a good company where they're working with a US-based hedge fund. It's a buy-side role. I pinged them on LinkedIn. I got an interview scheduled. And it clicked. So I came back to Pune. For me, one is it is buy-side. I'm still, my CFA level 1 knowledge is being put to work. I'm doing analysis work. Actually, at that time, buy side, sell side, ऐसा कुछ नहीं था. But as long as expectations बहुत ही low थी कि as long as I'm doing analysis work, I'm looking at stocks, I'm happy. Yeah. So I'm coming back to Pune. So that was the thing. So I came back, and again here was a different kind of. Now there's a big shift in your environment and then your culture. Of course. So there you're a backend, you're working for someone, you have to work late, and meaning you have to just finish the work and go. And abhi usme bhi, when you're working with a US client, probably they are more better, they're good, they are considerate. If you're looking at UK client or you're looking at maybe Hong Kong client, they're different. So here, when you say different, what do you mean? हांगकांग वाले क्लाइंट वो खुद 2 बजे तक बैठेंगे, आपको वही 2 बजे तक बिठाएंगे और उनको काम चाहिए. अगर आप if your work probably is not fitting up to their mark, they'll give you some harsh words as well. अच्छा. So that's what Hong Kong guys are. When you're saying Hong Kong, you're talking about the white people in Hong Kong, right? No, also Chinese. Oh, sure. Okay. Chinese people. We REITs हम देख रहे थे तो हांगकांग में बैठ के we were looking at Chinese REITs only. Acha, okay. So they were essentially Chinese people. So some of those people were harsh. UK people also, they are not considerate. मतलब अगर उन्होंने काम बोल दिया हाँ, मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपका प्रॉब्लम है. अच्छा. हाँ, but US people are like भाई ठीक है मैं कर लूंगा. अगर आप उनको काम भेज दो आप और आप उनको बोल दो कि भाई ऐसा है, अगर मुझे कुछ करना बोले कुछ नहीं करना, तुम घर चले जाओ, मैं देख लूंगा. अच्छा. So that's at my 1 year stint. I saw there's a big US के बारे में अच्छा सुन रहा हूँ मैं. अभी maybe my experience was that way. कि मैंने ये पर्सपेक्टिव कभी सुना ही नहीं था आज तक. क्योंकि मतलब जनरली लोग बात करते हैं कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ उसके साथ, लेकिन क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से कितना एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है ये मैंने कभी एनालाइज नहीं किया था. और शायद किसी ने, ज्यादातर लोग यूएस क्लाइंट के लिए काम करते होंगे तो उनको पता ही नहीं है कि दूसरा साइड कैसा है. हाँ. वो 1 साल में वो मैंने शुरुआत में देखा. एंड देन यहाँ पे जैसे आया मैं, इट वाज अ ड्रास्टिक शिफ्ट. यहाँ पे आई एम वर्किंग विद माय फंड मैनेजर where I have a certain set of coverage of stocks. I have to study those stocks. I have to study the sector. And there's a big focus on study where you'll be given ample amount of time to understand the sector, understand your companies. And then if you like something, you have to recommend those stocks to your fund manager. अच्छा. And कोई boundaries नहीं है कि आपको ऐसा analysis करना है. This is a path कि ऐसे analysis करना है. You have your freedom. जैसा analysis करना है वैसे करो. बस pitch करो fund manager को. There's no one in between. There's no reporting manager. There's no nothing. Fund manager in the US. Yeah, fund manager sitting in the US. You are talking to him on a everyday basis. Probably you're talking to him for a 1 hour, 1.5 hours every day, and you are discussing your sectors with him. You're discussing your stocks with him. आपको कौन सा सेक्टर दिया गया था पहले? मेरे को दिया गया था टेलीकॉम.
अच्छा यूएस टेलीकॉम दिया गया था. सो आई हैड अ मेंटर इनिशियली. मेंटर के साथ काम कर रहा था एंड देन आई वाज टॉकिंग टू द फंड मैनेजर. पहले 6 मंथ मेरे साथ मेंटर था. अभी द बिग डिफरेंस इन द कल्चर वाज ओनरशिप. मेरे स्टॉक्स में रात को 3 बजे उठ के देख रहा था कि क्या कर रहे हैं. बराबर है. क्योंकि if I've recommended, I recommended my first stock and so वो रात को 3 बजे उठ के मैं देख रहा था यार कैसे कर रहे हैं. तो there was a lot of ownership, there was a lot of interest and I was happy doing my work. ये काफी चैलेंजिंग नहीं लगता सर, क्योंकि आप 1 साल आईबी में काम करके आए हो और अभी आपको 8 साल हो गए हैं. अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक स्टॉक रेकमेंड करना या एक स्टॉक रेकमेंड करना कौन से फिलॉसफी से, कौन से स्ट्रेटेजी से बहुत सारे साल लग जाते हैं. वो कन्विक्शन और वो क्लैरिटी लाने के लिए कि स्टॉक सिलेक्शन होती कैसे. राइट. और आप सेकंड ईयर में जाके आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप टेलीकॉम सेक्टर में आप स्टॉक रेकमेंड. तो हाउ डू यू बिल्ड दैट बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज? मतलब आप कुछ पढ़ रहे थे साइड बाय साइड? फर्स्ट 6 months, so first 3 months तो हमारा एक डेली कॉल होता है जहाँ पे आप हर दिन डेली कॉल में आप आपके सेक्टर के बारे में अपडेट्स देते हो. तो पहले 3 महीने हम बस सुन रहे थे. हम डेली अपडेट्स. पहले 3 महीने तो वी डिडंट स्पीक, वी वर जस्ट लिसनिंग. तो वी वर गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, like 6 to 9 months of time where we was just learning, absorbing and studying about our sector. So it took 3 quarters, 9 months to recommend the first stock. How does a company like that, which is into this business of providing manpower for buy side or the fund manager, get that conviction? Because they have to also stay with that candidate for 9 months and also believe in this candidate कि ये candidate सीखेगा और इसको interest भी है. कैसे चलता है मतलब? क्योंकि इतना पेशेंस तो सेल साइड में नहीं होता है. नहीं, करेक्ट. सो नो, या दिस इज सो यहाँ पे इट्स पुणे इज, दिस इज द फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ माय यूएस बेस्ड हेज फंड. राइट. सो इट्स नॉट केपीओ, इट्स अ कैप्टिव थिंग and I'm directly working with the fund manager who is also the owner. Oh, okay. Yeah, so it's a very small set of people, 4 or 5 people there, 3 4 people here. Of course, so you're expected to take sample of it to be small. Yeah, and you're working with the fund manager every day. Yeah, but yeah, as you said, they have that kind of a patience. They give you time, and because you're a fresher, उनको पता है कि आप नए हो and you're going to take time. So and there are mentors which are helping you day in day out. So any of your work doesn't go without a quality check with to the fund manager for the first year. Or so within 1 year you get to stand on your feet and you can send your work and you can recommend stocks. And there's always to and fro. So in your sector, let's say, I just want to understand, because this is new for me also, because I've not really discussed much with the buy side, because the buy side जो इंडिया का buy side है वो आपको पता ही है कैसे चलता है. तो like आप स्टॉक्स, क्योंकि एक है कि सेल साइड में आपका फोकस है कि आप रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेगा, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कमीशन बन जाएगी. बाई साइड में तो ये सब कुछ है नहीं. बाई साइड में तो डायरेक्टली आपका ही पैसा है. तो डज द बाई साइड एनालिस्ट go through the same process of research as a sell side analyst, or does he have a much simpler process of figuring it out? अभी buy side में हमारे यहाँ पे I can just say about my company. Right. There are no processes. Correct. अगर आपको कोई कंपनी आपका your end goal is to reach a recommendation on a stock, there is no a set path to reach there. Okay. It's all up to you. इस सेक्टर में आपके हिसाब से कौन से टाइप का एनालिसिस करना चाहिए. It's all up to you. After working few years with the fund manager, you know what fund manager thinks, what he likes, what he doesn't like, what kind of analysis he believes in, what kind of analysis he doesn't believe in. But initially, you look at market share, you look at operating metrics and ARPU, subscribers. You look at all of the, basically, if you can measure thing and you can track it, that's how you learn about it. So पहले होता है कि first there's no set process, and then आपका it's all your freedom, all of the data you have to gather in your Excel sheets and everything. And once you do all of that, you read all of the reports. Once you get convinced about something, there is also no research report as such. There's no certain format of a research report. You just send him an email
एंड अभी उसमें भी आई टेल यू बिग डिफरेंस. आईबी में हम जब भी कुछ भेजते थे तो उधर फॉर्मेटिंग ये सब सेट कलर्स होते थे. पाई चार्ट में भी पहला कलर कौन सा होगा, दूसरा कलर कौन सा होगा, उसके जो कलर के जो ये पॉइंट्स होते हैं वो सब हमें नोट डाउन करने पड़ते थे बुक में. यहाँ पे कोई नहीं यार, फॉर्मेटिंग कुछ भी भेजो, कैसे भी भेजो, मतलब दैट्स समथिंग. Fund manager is not interested in your formatting, is not interested in your colors. He's interested in your analysis. As long as he is happy with that, bus. And then you're not working with so many people. You're working with one people. And luckily, I'm working with a good guy, so he's just focused on analysis, and he's just focused on what you are. I mean, so basically, you're saying that when you have a good idea, as a buy side analyst, do you? I mean, once let's say I have an idea. An investment idea about a company. So what is your first approach as a buy side? Do you start like reading about that company a lot, or do you start like okay अभी वो sell side जैसा data डालता हूँ, मॉडल बनाता हूँ पहले, फिर रिसर्च साइड बाय साइड चलते रहेगी और फिर मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, या मैं डायरेक्टली बिगर पिक्चर देखता हूँ ये कंपनी का और कोई गेम प्लान देखता हूँ कि अच्छा फॉर एग्जांपल राइट लाइक you can talk about Maruti in India. So the game plan for any other automobile company is the fact that distribution किसी के पास है ही नहीं जितना मारुति के पास है. That is their monopoly. Correct. I mean, you can say almost that is the barrier to entry. Correct. And because of this, they're always doing good. Right. So ऐसा आप गेम प्लान पहले सोच के पहले पिच करते हो या ये एंड में आता है? हाँ, मतलब आपको लगता है कि यू हैव, सपोज करो आपको एक स्टॉक अच्छा लगा, आपको पता है कि यू हैव वेरी लेस टाइम, कि अगर आप लेट हो जाओगे सब बनाते बनाते तो ये स्टॉक निकल जाएगा. तो यू जस्ट पिक द बोन्स. ये सेल साइड का यू कैन पिक डेटा फ्रॉम वेरेवर सोर्सेज दैट यू वांट, ऑफ कोर्स आफ्टर वेरीफाइंग ऑल ऑफ दैट. Put it all together, send him an email. If it's just putting data all together and sending him with few sentences, and then you call him directly. I want to talk about this. I've sent you something. And then you spend 1 hour, 1.5 hours just discussing about that. Acha. And then if he's convinced, how does the discussion go? Like for example, what topics do you cover? Like what, for example, you say that okay, I want to, I have to discuss about XYZ stock. So now you have 1 hour to discuss with him. So how does the fund manager in a hedge fund? What does he talk to you first? So I think if you're talking about a new stock, probably he's also new to it, assuming he's new to it. So he'll go like, how big is the sector, who has what market share. He's very in love with price and volume metrics. So how is the pricing trending? How is the volume trending? How are the margins? And how are the competitors' margins? And then he comes from a credit background. Okay. So he likes to look at replacement cost usually, if there you can do on a company. So we know that he is in love with replacement cost. Right. So अगर हमें पता है तो हम पहले करके रख लेते हैं. So we can look at replacement costs. So these kind of certain things that we all of that we think is important, we discuss about that. And then of course there is certain kind of things which we haven't worked on and he has come up with. Okay, let's do this, let's do that. I think this is a good idea, this is a bad idea. If हमको पता चलता है कि if he is not liking it, then यहाँ पे we don't push much. Then we get into something new, because we know that if he's not liking it, is not liking it. So then but whatever we think is important, जैसे आपने बोला market share, price and volume metrics, margins, आगे की जाके growth, and then all of that, you pitch him. Then he comes up with a whole lot of things that he thinks is important, and then we work on that, and then we get back again. There's another call. So there are 2 to 3, 4 calls just to and fro on this within 3, 4, 5 days. Acha. And if he likes it, he'll quickly buy it. So I mean, does it ever happen to you? पहले अभी तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब मेरे को आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं और जबरदस्ती क्योंकि हमको रेकमेंड करना है इसलिए हम कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं होता है. So there is pressure from the higher side that we want ideas, we need ideas, and we don't look, हमें ideas नहीं मिलती है, तो so that as you said, that difficult situation आती है कि हमें ideas चाहिए but ideas नहीं मिलती.
then but अभी हमें ये भी पता है कि अगर हम प्रेशर में आके कुछ देते हैं तो that hasn't worked well. Right. So तो ऐसा like कभी प्रेशर आता है कि नहीं देखो बस आप तो आइडिया नहीं जनरेट कर रहे हो, हाँ टाइम से आइडिया जनरेट करो? नहीं आता है यस आता है. I'll give you an example. लॉकडाउन के टाइम पे मार्केट्स वर फॉलिंग एंड हमें प्रेशर था शॉर्ट आइडियाज देने and then in the pressure me and my mentor we gave a short idea which didn't terribly bad, you know. So हमने हमारे फिर इंटरनल रूल्स बना लिए हैं कि प्रेशर में नहीं आएंगे एंड ये सब नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. बट या आप जैसे बोला प्रेशर आता है, वो प्रेशर होता है, आता है. एंड how much of this update do you get? Like, do you have like in your working style, do you have this रिपोर्टिंग कि देखो मैंने अभी 20 रिकमेंडेशन दिए थे, इसमें से 10 रिकमेंडेशन यूज हुए, उसका परफॉर्मेंस इतना है. डू यू गेट सच ओवरऑल रिपोर्ट और फीडबैक्स और it's a small firm. We don't have like a formal report of this. बस एंड ऑफ द ईयर जब आपका रिव्यू या बोनस डिस्कशन होता है उस टाइम पे आप याद रखोगे जो नेम्स चले हैं, वो याद रखेंगे जो नेम्स नहीं चले हैं. So that discussion में वो सब चीजें आती है, but it's all there's no like proper like a return format or a formal report that comes out with actual आपका that they don't hold you to the T. They know that it's a world where, you know, nobody can be 100% right, or things will go wrong, things will go right. So that way they're considerate. Of course, there's pressure, but then all of these discussions happen during your bonus and review discussions. So primarily the hedge fund that you're working for is majorly into macro strategies. Yeah. Macro based. We can call it as a macro based strategy. Yeah. Right. Primarily. Correct. Okay, so not and does your fund? I mean, I'm not asking you any secrets, but I'm just asking you: does your hedge fund also employ leverage in such ideas? Yes. So US में you can borrow and invest. Right. So they usually they are almost more than 100% invested. Usually, yeah, they are levered. Yes. How much of mentoring did your fund manager was able to give you over this 7 years? So see, fund manager sitting there, he's looking at so many sectors. He wakes up at 4 a.m. his time. मतलब यहाँ पे हम दोपहर को 2 बजे या 2:30 बजे बैठे होते हैं, and he's awake and he's talking to us. And he has to look at so many sectors, he has to look at so many funds. So he's working hard. We can't expect him to mentor us or teach something. Of course, we have discussions on sectors and stocks where he's. इनका यूएस में ज्यादा कोई मतलब लोग है नहीं. वहाँ पे ज्यादा बड़ी टीम होती है versus US. नहीं, बराबर लॉजिकल है, इधर ही रखना, लेकिन मतलब उधर वो very few, 3 to 4 people. हाँ, यहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं. ऐसा होना चाहिए हेज फंड. जैसे वो बिग शॉट में आपका मूवी में आपको वो ये बुक ही थी इसकी एक्चुअली में, द बिग शॉट. राइट. इसमें जो माइकल लुइस ही था ना शायद. तो उसकी जो हेडफोन उसमें तो 2 ही लोग थे. हेडफोन्स आर सपोज्ड टू बी स्मॉल ओनली, राइट? बिकॉज़ yes ऐसे चलेगा. Correct. So more people sit here, less people sit there, and he's working on so many things. We can't expect him to आपको टीचर के जैसा समझाए या पढ़ाए. नहीं, वैसी मेंटरी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, वैसी मेंटरी बोल रहा हूँ जैसे कि आइडियाज की बात आ गई है ना, क्योंकि आप डायरेक्टली यूएस बेस्ड हेज फंड के साथ फंड मैनेजर का काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज गोइंग टू बी correct. So mentoring, on the mentoring front, you have initially for first couple of years you have a mentor. For first 1 year you have a mentor which is sitting beside you. You know, who has probably 7-8 years of experience, and you're a fresher. He'll mentor you for first year. अच्छा. Talking to things. If you think this is अभी आप मतलब जनरली अभी यहाँ पर पुणे में लेट्स से इंडिया में रिपोर्टिंग आप किसको करते हो? फंड मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्टिंग करते हो या यहाँ पर कोई मैनेजर है उसको? No, यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं होता. You directly work with the fund manager. There's no reporting here. They're just admin guys here, HR and all. अच्छा. You don't report to anyone here. And there's basically a mentorship. There's a senior mentor here,
And then after a couple of years, probably you work with a mentor from the US. So I worked with my mentor who's sitting in the US office, who is also the head of research. You basically अगर कुछ आपको लगता है कि ये आइडिया अच्छी है नहीं है, आप उससे डिस्कस करवा सकते हो पहले. So that's something that you can do. So culture wise, that fund manager से बात करने के time you can think twice. But if you're talking to your mentor, you don't have to think twice. Right. It's like a very friendly environment where you can discuss anything that you want. Is that the reason why you have been here for 7 years now? Yes. Culture is the biggest thing that, that's the first thing that I'm here. ऐसा तो नहीं होगा कि आपको ऑफर नहीं आया होंगे. हाँ, correct. ऑफर आए हैं. तो आए होंगे. ऑफर आए. बढ़िया भी आए होंगे. Right. तो कभी आपको ऐसा वो नहीं हुआ, टेम्पटेशन नहीं हुआ? I think here, people is the big factor. That I'm working with these people, they're like family now, and you can talk about anything. And अभी अगर मैं जाऊंगा तो पुणे में, my constraint is I don't want to go out of Pune. Move out of Pune. So move out of Pune. अगर फिर पुणे में रहना है तो they are KPOs again. Right. And then उधर client वाला relation आ गया आपका फिर से again. It's not captive, it's client. फिर मेरे को वो एक साल की याद आ जाती है फिर. फिर वो मेरे को थोड़ा सा that's something that that's the reason, and the culture is the reason why I'm here. So what is, since you're a buy side analyst, do you think the markets are overvalued globally at the moment? Because we keep on hearing that Warren Buffett is now sitting on the maximum amount of cash that we know about. What do you think? Right. So, see, post-COVID, I think the US markets are continuously doing well. Like last year, they were up 24, 25%. This year, they're up 11%. And all of this is driven by one sector, which is tech. Right. And this cannot continue. Of course, when I talk to my friends and tech analysts, and they say that there's huge earnings growth, but then there's been like a big multiple expansion as well in the tech side. Right. So now I think my personal bias is, nobody knows anything, but my personal bias is, probably there's not much upside from here, and we are looking for a downside. We just need a reason now. Exactly. That's what, because we've been looking for a reason for quite some time now. Right. I mean, I would not really call even COVID a proper downside, because at the moment, I'm not able to explain what is exactly happening, because on the earnings side, if I see, obviously the top 10 companies will obviously perform better, in any sector. Correct. But apart from that, the way the stocks have been going up, right, is probably, I feel it is more euphoric to events rather than the ground reality. Right. And it's been a long time since that correction has actually happened. So do you see that correction actually happening? Yeah. This year. How does a hedge fund look at that? Because see, I think another problem is that अगर मैं ऐसा सोचूं कि हाँ बॉस करेक्शन तो है और मैं कैश पे बैठ जाऊं तो साला मेरा इन्वेस्टर चिल्लाने लग जाएगा. Correct. तो बोलेगा रिटर्न किधर है? Right. No, yeah. So what we do is, if you have a view that there's not much upside, what you do is you position yourself to the stocks which you think are, they have lower valuation, they have very nice free cash flow yield, they have almost no leverage. Good quality, basically. Good quality, yeah. अभी यूएस में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें maybe where you have very high free cash flow yield, very almost negligible leverage, and then they're growing at a decent pace, and they are recession proof. Right. Kind of stock. So आप उधर ज़्यादा आपका position बना लेते हो versus the tech. That's how you can position yourself in when you think that there is going to be. Nobody knows when that correction is going to happen. Correct. But when that happens, there is no way out also, because 40-50% correction is going to happen across the board. Right. So, I mean, how does a hedge fund, I mean, एक है कि अगर आपने वो 40-50% में बचाए भी नहीं तो भी क्लाइंट गुस्सा होगा, मतलब इन्वेस्टर, और अगर आपने बहुत ज्यादा ही सेफ खेल लिया तो रिटर्न नहीं आएंगे. Right. And I think, I can talk about my firm that, my fund manager comes from a credit background. So he's conservative. And कुछ लोग बहुत मतलब he's of course managing people's money, and so he's not too aggressive at any time. So he's more conservative. So जैसे आपने बोला कि सारा ही पैसे निकाल लो कैश में डाल दो, ऐसे
extreme चीजें शायद वो ना करे. So Okay. at most what he'll do is he'll position himself in a defensive kind of stocks and defensive kind of sectors when he thinks that there is downside. So that's how he will work on in this kind of Do you think environment. the next crisis, I mean, do you think a credit issue overall in the world at the moment? Do you think there is a credit next? Do you think something is going wrong? Looking about US, US, the government is taking out so much debt, Right. उनका एक debt ceiling होता है, और वो सीलिंग का मतलब ही क्या है, जब वो सीलिंग पे जाएगा तो आप सीलिंग बढ़ा दो. मतलब हम हमारा घर है, हम बोलते हैं हम इसके ऊपर हमारा डेट नहीं ले जाएंगे. अगर डेट उधर जाता है तो आप एक साइन कर देते हो पेपर पे, एक मीटिंग करते हो, डेट सीलिंग बढ़ा देते हो. Just improving, like increasing your debt ceiling and taking on more debt. So I think that's riskier for the US economy, and eventually it's riskier for the global economy. So do you think that debt is still can be a source of problem? The next problem. Yeah, correct. So what is the next plan? I mean, apart from this, I mean, in a buy side, what do you see yourself doing? Like you getting into in the same firm, let's say, or not in the same firm, doesn't matter. But do you see yourself now slowly getting into the feeling of, managing schemes and managing funds? So I think, I would like from here. My point is, I just don't want to get into another company. Whenever I leave, I'll do something on my own. No, even if it's the current company. Yeah. Because you have also have a lot of experience under your belt. So do you see, I mean, is that your ambition, like getting into now directly managing some assets in your own company? अभी यहाँ पे I'll tell you, म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो आप एनालिस्ट होते हो, सीनियर एनालिस्ट होते हो, एंड देन यू कैन सी एट सम पॉइंट you'll become a fund manager बाद में. Right. Our firm में owner, fund manager, he's the same thing. You can't replace him, right? It's his company. Right. So, and but of course they can expand, no? Yeah, they can expand. Maybe they can segregate that. Okay, this amount of capital of these kind of investors can be managed under this kind of a strategy by this person. So, would you be open to doing that? Yeah, it's not a possibility in our office, but I would definitely be open to something like this. Eventually, I'm also looking at. I personally think asking people and managing people's money is difficult. Yes, absolutely. Agreed. Meaning not enjoyable at all. I kind of have a personality. If I do something and someone says you have lost my money, I'll not have a good night's sleep. Yeah. And so I will be happy to losing 50% of my money, right, versus even 5% of someone else's money. So do you have any restrictions in managing your own money in this firm? Because this firm seems to be because you've been here for long. Yeah. No, I think they are okay with investing. They're not. So we have restrictions on trading, definitely. Okay. But we can do long-term investing as long as direct stocks in direct stocks. Yeah, direct stocks also they're okay as long as we are reporting everything. Okay. They're okay with. Yeah. So you see yourself managing your own capital in India more. Yeah. That because I also come from the same thought process, because I initially when we were trying to set up managed futures, which in India is called as AIF category 3, right, which is a hedge fund name for another name for a hedge fund. Right. What we realize is that the major problem in India is not in India actually. There's not everybody has that. I would say emotional quotient to generate return for their clients and at the same time take shit from them. Because maybe in the US the clients are much more educated. Right. They know that they can lose money, and they usually stick with a fund manager for a long period of time. And they understand that higher returns means higher risk. Correct. India mein ulta hai. Higher return with lower risk, that is not possible. Correct. And they don't understand that markets can correct, and risk means that okay, you can correct and then you can come back. Right. उनका ये नीचे जाना ही नहीं चाहिए कभी. तो ये काफी मुश्किल हो जाता समझाना. और वो समझाने, और प्लस इंडिया में लेवरेज का प्रॉब्लम है.
No, yeah, you can short stocks positionally. You can stock in futures. Futures, yeah, but cash में आप you can't short. बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल. और सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से आपका लिवरेज 1 ही हो सकता है बस. मतलब अगर आप मतलब 100% जा सकते हो. यूएस जैसा कोई अनलिमिटेशन नहीं है. और आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल ऑल्सो कि मतलब खाली 100% लिवरेज पे गेम किया जा सकता. करेक्ट. आई थिंक इंडिया में जो भी आई थिंक एआईएफ्स बहुत अच्छा रिटर्न्स कर रहे हैं. दे आर ऑल डूइंग इट फ्रॉम स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स. अरे सर वो इट्स अनदर नेम फॉर म्यूचुअल फंड. It's nothing but a PMS. I mean, I didn't understand only what is the point of setting up AIF in India when leverage cannot be employed. There is no taxation benefit. In fact, you will be taxed at business income. तो अगर मतलब आप सोचो ना, मतलब अगर आप 15% में आप हो कैपिटल गेन में, लेकिन क्योंकि आप अपने AIF बना लिया तो अब आप 30% में जाओगे. तो why will somebody invest in AIF? कोई लॉजिक ही नहीं है. लॉजिक ही नहीं है. करेक्ट. क्योंकि अगर मुझे यूनिट्स मिल रहे तो मुझे अगर एआईएफ में भी कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के स्ट्रक्चर मिल जाता तो अच्छी बात थी. तो वो एंगल से इंडिया का मार्केट भी बहुत दूर है. इसलिए जो भी अच्छे हेज फंड मैनेजर्स हैं वो या तो यहाँ से चले गए. I mean created the bases in Ireland or Singapore or Mauritius for a better structure and better tax structure. ऐसा है. तो देखते हैं. So thanks so much for coming in, and it was very interesting to discuss same here buy side with you, because the stocks and because the approach is very different and very simplified, which is what I liked. And, I'm sure you're already giving our students your precious time, educating them. We always keep on hearing the feedback, and probably since you're in Pune, we should meet up once. Yes, definitely. I also wanted to tell you, you said that you were managing money and you were working with an AIF. You founded an AIF. Just wanted to tell you, during my MBA times, very close friends of mine, they interned at your firm. Is it that Innovate Research Investment? Yes. So I knew Innovate Research from that time. Achha. That and I knew some. So after that, what exactly precisely what you said at the end, right? That is why I connected, because that is the decision we took. That at the end we was like कि यार ये लोगों का पैसा मैनेज नहीं हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि that time जब चालू किया था तो पैसे कम थे. लेकिन 5-6 साल में पैसे हो जाते हैं लिवरेज कर करके. तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं बचा वो करने का. तो हमने सबका इन्वेस्टर का पैसा वापस कर दिया, मतलब कॉन्शियसली. और फिर खुद का पैसा मैनेज करते हैं. Or that is much better. You get a good nights of sleep. You know that if you are under drawdown, you'll recover. You don't have to explain नहीं करना किसी को. किसी को समझ में नहीं आता है. drawdown मैंने कितने लोगों को पिच में बोला कि भाई 40% ड्रॉडाउन. तो और ऐसा भी नहीं कि उनको स्टैंडर्ड डिविएशन समझ में आ रहा है. उनको देखो, अब मैं बोलता हूँ शार्प है, ठीक है, तो शार्प रेशियो है, तो शार्प रेशियो व्हाट मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, एक डिविएशन पे कितना रिटर्न मिल रहा है आप वो बता रहे हो. लेकिन वो शार्प को ऐसे समझ ही नहीं रहे. वो शार्प को समझ रहे देखो 3.4 है, बहुत अच्छा है. अरे लेकिन ऐसा नहीं होता है ना. और कोई ड्रॉडाउन की बातें नहीं करता. रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम्स है. मतलब लोग 2007 का रिपोर्ट ही नहीं दिखाते हैं. तो इसलिए हमको लगा कि यार और इसलिए और प्रॉब्लम क्या है कि स्केल का भी प्रॉब्लम है इंडिया में. इवन द डेरिवेटिव मार्केट्स का स्केल का प्रॉब्लम है. Correct. Some yeah, you can't put in a lot of money. Liquidity नहीं होती. आपको सेबी से कॉल आ जाएगा. आप अगर 3 करोड़ पे भी अगर आप लेट से 300% 400% का लिवरेज लेते हो, एक्सेप्ट ऑब्वियसली द मेन एसेट्स, लेकिन आप सोयाबीन ट्रेड डाल दो लेट से, आप मतलब आप ही मार्केट चलाओगे. इट इज वेरी डेंजरस. Because you might enter the market, but you might not be able to exit the market. Exactly. Yeah. India में तो long term में तो stocks ही solution है. Correct. Leverage वाला market अभी तो US में amazing है. मतलब क्या नहीं है. Right. वहाँ पर शायद mentality भी बहुत अलग level पे पहुँच गई. But anyways, I think whenever you are there, free, let us know. Yes, sure. Good to yeah, definitely. Yes. Pimpri. अच्छा, Pimpri side. Do you ever come to Pune side? Yeah. Almost once, twice a month. Yeah.
Yeah. So whenever Yeah. you come, please let us know. Sure, definitely. Right? Definitely.